स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल साइंसिया क्लास में। और इस चैनल में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्लासेस के वीडियो मिलेंगे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी में हम लोग किस चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो हम लोग बायो में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द living organisms, and you know it is the branch of science. So biology is the branch of science in which we study about the living organism. Living organisms are of two types, plants and animals. So we can differentiate living organisms into two groups, plants and animals. Okay. So in biology we study about the plants and animals. So biology has two branches. First one is botany and second one is zoology. So in biology there are two branches. First one is botany and second one is zoology. First one is botany and second one is zoology. So this is the main branches of biology, botany and zoology. After that we will know about the father of these branches. Who is father of biology? You know, father of biology, just write down. Father of biology, father of biology is Aristotle. ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई? एरिस्टोटल. ओके. नेक्स्ट, बॉटनी. हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? यू नो, फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रास्टस. राइट डाउन स्टूडेंट्स. फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस. ओके. एंड second is father of zoology, again Aristotle. Okay. So in this class we know about what is biology. Biology is the branch of science in which we study about the living organism, and we know that living organisms are of two types. First is plants and second one is animals. And these two living organisms are studied in biology. And father of biology is known as Aristotle, and father of botany is known as Theophrastus, father of zoology is known as Aristotle. Okay. So this is the overall introduction of biology according to your CBSE board. And this is the basic knowledge of biology. Okay. Okay, thanks. और एक आपसे कहूँगा दोस्तों, अपील करूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस साइंसिया क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और पसंद आए तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो देता रहूं
और किसी भी तरह का कमेंट या किसी तरह का सजेशन देना है तो मेरे दोस्तों काइंडली आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।